discussed about the types of rational number and the breakup of the rational number के कौन से numbers उसमें added थे और I hope कि आपको जो है वो समझ आ गया होगा and if you have any confusion please do let us know in the comment so हम उसको थोड़ा और मज़ीद बेहतर कर सकें और आपकी confusion जो है दूर कर सकें मोस्टली ये होता है कि one go के अंदर sometime वीडियो आपको जो है वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा इश्यू होता है यू नीड टू पॉज इट यू नीड टू रिपीट इट और इस तरह से आपको जो है वो थोड़ा करना पड़ता है तो वो आपके लिए काफी ज्यादा जो है हेल्पफुल हो जाता है ठीक है टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टीज एडिटिव प्रॉपर्टीज देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज ओके स्पेशली इन अ मैट्रिक बुक लेकिन अभी हम मिडल के हिसाब से अगर हम डिस्कस करेंगे तो देयर आर थ्री मेन प्रॉपर्टीज दीज आर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज associative and distributive so we will discuss it one by one and we will apply on the different values as well ठीक है और मैं आपको इसमें रेफर भी कर दूंगा बुक ठीक है वेट अ सेकंड आई हैव अ बुक सो बुक में क्वेश्चन नंबर्स जो है उनको भी मैं आपको ये रेफर कर दूंगा ठीक है एक इम्पॉर्टेंट चीज और है वो ये है कि बेसिकली आई एम डूइंग दिस नॉट फॉर सम स्पेसिफिक स्कूल और सम स्पेसिफिक कोर्स नॉट अबाउट द डी सीरीज ओनली और ऑक्सफोर्ड आपने जो दूसरे स्कूल से जो रिलेटेड हैं दे कैन डिस्कस इन द कमेंट अबाउट देयर टेक्स्ट बुक्स और जो भी इनके टॉपिक हैं वो किस तरह से हैं आप रेलिवेंट क्वेश्चंस जो है बेसिकली मैं एक जर्नल वीडियोस बनाता हूँ उसमें ये होता है कि ये जो है सबके लिए बेनिफिशियल हो ये किसी एक स्कूल के लिए एक्चुअली रिसोर्स आई एम यूजिंग द D1 ठीक है लेकिन अदरवाइज अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट या किसी भी बोर्ड से आप ताल्लुक रखते हैं तो ऑब्वियसली टॉपिक तो यही होते हैं ठीक है उसमें अब आपकी मैथ्स में जो भी आप पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली 2+2 इज 4 एवरीवेयर इट इज नॉट डिफरेंट इन डी सीरीज एंड डिफरेंट इन पंजाब टेक्स्ट और डिफरेंट इन wherever the you are living there तो मेरे ये वीडियो बेसिकली सबके लिए और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ये चैनल सिर्फ इस सोच के साथ स्टार्ट किया गया है कि जो लोग ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनको प्रॉब्लम्स हैं और ज़ाहिरी बात है या जो जा नहीं सकते ठीक है और जैसे आई से के स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल द गर्ल्स दे कैन नॉट गो लाइक आउटसाइड और पढ़ने के लिए जाना एकेडमीज जाना मुश्किल होता है पिक एंड ड्रॉप का बॉयज़ के लिए भी कई दफ़ा पिक एंड ड्रॉप का इश्यूज होता है दूर है तो वो घर बैठे अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं सो एनी हाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्क properties let's start with the commutative property the first one is commutative property commutative property this is basically for both for addition it is applicable for addition and for multiplication for example the property is a plus b is equal to b plus a and if we have some values for example I am referring the book exercise 1a basically this is from D2 updated exercise 1a and commutative property is related to question number 8 values can be in the form of fraction or it can be on a symbol number I just take let 4 and 5 a is equal to 4 and b is equal to 5 so when I apply the situation left hand side this is left hand side a plus b which is 4 plus 5 and is equal to 9 the other is right hand side this is right hand side on the another side of is equal to 5 this is like b plus a 5 plus 4 and this is 9 if you observe that this and this answer is same and it should be same okay you need to solve it such a way that you will get the same answer otherwise definitely you have some mistake during the calculation and this is a complete set so as left hand side is equal to right hand side hence proved this is the answer same is the case with the multiplication even if you have some fractional value the property is like a multiply b and b multiply a this is the property for the multiplication and if you have a fractional value for example 4 by 5 and 7 by 2
So if we apply for left hand side, this is 4 over 5. I'm not writing the property again, I'm just writing the direct value over there. So this is it. Left hand side, you can see 2 ones are 2 and 2 to the 4. This is 14 over 5. This is the first property. And if we come to the right hand side, now we change the places. First we have 7 by 2 and then we have 4 by 5. Again we will cancel them. We do the cancellation and this is 14 over 5. As you can see that the answer of both the values are same. So as left hand side is equal to right hand side, hence proved. So this is commutative property.